Okay, thank you very much. We are now going to resume our session right now. Okay. So please, Ma'am Tabitha, please start now. Yeah, I believe everyone is back. Welcome back. So let's resume the session. The last law that I was talking about was the law of design, or abhi agla law, the law of pain. Law of pain talks about good management of bad experiences that leads to great growth. If I ask this question, agar main ye sawal पूछूं, is there someone who never had a bad experience or who cannot relate pain to his life? I believe no one is going to answer this. No one is going to say that, yes, I am. Everyone goes through bad experiences in life. In fact, sometimes worst. लेकिन उन्हीं experiences से अपनी सिखलाई ले लेना और उस experience को good experience में good learning में convert कर देना, this leads you to great growth. So this is what we study and what we learn in the law of pain. Then there is law of reflection, and reflection में आकर हम ये सीखते हैं कि ये अच्छा है कि आप जिंदगी में पॉज लें, आप ब्रेक लें, वरना जिस तरह से अभी तो नहीं है लेकिन पहले जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे जिनमें वो टेप वाले कैसेट्स चलते थे, तो अगर आप उसको बहुत मुसलसल चलाते जाते थे, बहुत मुसलसल, और उसमें इंटेंशनली आप उसको पॉज नहीं देते थे, खुद नहीं रोकते थे, तो एक वक्त ऐसा आता था कि वो कैसेट स्टक हो जाती थी और टेप को ब्रेक लग जाता था, एक पॉज आ जाता था। जब आप निकालते तो अक्सर फिर वो टेप टूट जाता था, अक्सर वो लाइक एक्सपैंड हो जाता हॉट गर्म होने की वजह से और ज़्यादा जो है कंज्यूम होने की वजह से, और वहाँ पर फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता। Likewise, in our lives, it's not good that you continue running, running and running. अपने दिन के बाद अगला दिन और हर दिन और आप बस भागते रहे. It's really important कि इससे पहले कि जिंदगी आपसे पॉज या ब्रेक मांगे, आप उसमें खुद ब्रेक लेना सीखें अपने लिए, good breaks. And you have a time to reflect on your life, if not every day, but at least twice a week. आप बैठे, आप अपने कामों पर, अपने दिनों पर, अपने कनेक्शंस पर, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान करें, आप गौर करें, where you are, where you want to be, what are you doing, how you can do it, what resources you have, and who can help you, who is not helpful, who can you avoid, who you cannot avoid, what can be added, what can be subtracted, how you can multiply. So it's a lot that should be done, or is zariye se bhi you grow a lot. So I'm sorry for my bad throat. Now we see the next law, which is called the law of ladder. यहाँ पर stairs नहीं कहा गया है, ladder कहा गया है, इस वजह से कि there is a difference. जो stairs होते वो already उतने फॉर्म किए जाते हैं जितना बिल्डिंग बना दिए गए हैं, लेकिन ladder वो उससे ऊपर की हाइट पे भी जा सकते हैं.
जितना आपकी लाइफ ग्रो करती है उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को एंड यू फाइंड आउट दैट यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर. So this is what we learn in the law of ladder कि जितनी बड़ी आपकी सोच होगी आप उतना बड़ा हो सकते हैं. So every time you have like for example बुर्ज खलीफा अगर बनाया तो क्या ख्याल है आप सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली वो सबसे बड़ी सबसे टॉल बिल्डिंग बन गई है दुनिया में. No, we still have more to come. इसलिए the bigger the thinking is, the bigger you can grow. इसी तरह से we have the law of rubber band और उसमें हम जानते हैं कि रबर बैंड जब अपनी नॉर्मल हालत में पड़ा होता है और वो स्ट्रेच नहीं कर रहा तो एक्चुअली रबर बैंड इसके लिए नहीं बनाया गया, तब रबर बैंड काम में नहीं है. वी डोंट से कि अभी रबर बैंड इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह से ये कहा जाता है ना कि शिप्स आर नॉट मेड टू बी एट हार्बर, वो किनारों पे रहने के लिए नहीं होती हैं कश्तियां. लाइकवाइज रबर बैंड स्ट्रेच करता है तो उसमें बहुत सी चीजें जो है वो उसके स्ट्रेच में कवर होती हैं. और इसी तरह से हमारी इंसानी जिंदगी में भी समटाइम्स टू ग्रो वी हैव टू स्ट्रेच. लेकिन अगर हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो फिर डाउटफुल बात है कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं. इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन यू लूज द टेंशन बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ ट्रेड ऑफ और उर्दू में कानून तजारत. सो कैसी तजारत, कैसा लेन देन. इट टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव exchange in life. You have to give up to grow up. कई मर्तबा आपको ऐसे ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं. Let's say maybe somebody got a great opportunity to work in another country और वहाँ सब अच्छा है लेकिन फैमिली नहीं ले जा सकते हैं तो many people trade off. Lekin sometimes, people trade off for habits. Sometimes people trade off for, their diet, their, like, जैसे खाने पीने के हवाले से, to stay healthy, they give up on so many things. और सीखने के हवाले से इस टाइम पे हो सकता है नॉर्मल डेज में आप रेस्ट करते हो, but you have traded off your nap or maybe other things that you would be doing. और अपने उन एक्टिविटीज उन कामों को ट्रेड ऑफ करके आप ये लर्निंग गेन करने जा रहे हैं. सो द हायर द क्लाइंब द टफर द ट्रेड ऑफ्स. जितना जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा जाना चाहते हैं, आपके ट्रेड ऑफ्स उतने ज्यादा टफ हो जाते हैं. आई बिलीव यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड एंड यू विल कंटिन्यू टू. देन द लॉ ऑफ क्रोसिटी, तजस्सुस, वो इंसान में बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है and like it's beautiful. Why? Because if curiosity stops, learning stops. So curiosity leads you to explore, to expand, to improve your imagination. So curiosity, imagination and creativity take us beyond ordinary. They expand our thinking and our possibilities. इसलिए holy curiosity, it's a good thing कि आप जितना मुतजस्सिस हों उतना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना सीख पाएंगे. न्यूटन ने भी ऐसा ही कुछ किया and then he formed the 3 laws of motion. क्यूरोसिटी में कि सेब नीचे को क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं आया. So a lot of things we learn in our lives just for the sake of satisfying our curiosity. Next is law of modeling, which says as a leader, your first step is not to lead, but to be successfully credible. इसमें बहुत ज़्यादा important ये बात सीखने को मिलती है कि जब आप एक लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में आप बहुत सारे लोगों के लिए
एक मिसाल भी बन रहे होते हैं, एक अमली नमूना बन रहे होते हैं, रोल मॉडल बन रहे होते हैं, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। लेकिन ये दो तरह से हो सकता है, अ गुड मॉडल और अ बैड मॉडल। सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स चॉइस कि वो क्या बनने चाहते हैं। देयर इज अ स्टडी विच टेल्स कि एक सोशलाइज करने वाला शख्स एवरेज 10,000 लोगों को, लाइक एक नॉर्मल सोशलाइज करने वाला शख्स एवरेज 10,000 लोगों को अपनी उम्र भर में मिल पाता है। सो व्हाट इफ you get to see 10,000 people, meet 10,000 people in your lifetime, और आपने उन पर जो आपका इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक सादा सा इंटरेक्शन रहा हो, एंड यू हैव नॉट हैड लाइक एनी इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ, आपकी वो मुलाकात कोई ऐसी यादगार ही ना बनी हुई हो, उन 10,000 लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता था, लेकिन जब आपने इस बात का ख्याल ही नहीं किया तो वो ऐसे ही गुजर गया। And life does not repeat itself, and it's not going to be a second chance to live on this earth. Isliye it's really important that we do care about this thing, that when we are growing, we are not growing alone. We have people around us, those who have to grow. Somebody has muted the mic. Do you want to add something or say something? Okay. Then there is the law of expansion. इसमें हम ये सीखते हैं, stop asking how long will it take, start asking how far I can go. So अभी क्योंकि सिर्फ मैं इसका orientation दे रही हूँ बुक का, तो उसमें I cannot show you that picture, but we do have a picture which has arrows on 4 sides. Yani east, west, north, south, all sides. And then a question is asked that, ये square जो है, ये कितना expand कर सकता है? Definitely, आप उस arrow को north expand करें, south expand करें, east, west, उतनी side पे expand होगा। इसलिए there is not an end to your expansion. In your lifetime, you can grow as much as you intend to. The next is, और यहाँ पे मुझे अभी स्टीफन हॉकिंग याद आ रहे हैं कि like his disease, his illness could not put limitations for him. ज़मीन पे रहते हुए this guy was limited to the wheelchair, but his thought, it reached and it crossed the horizons where the world still has not reached. और नासा आज उसके वो स्टडीज और उसके फॉर्म्ड जो चीजें हैं, उन परसेप्शंस और उन लर्निंग्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं. So don't put limits to yourself. Keep growing. Then the last one is law of contribution. The greatest gift you can give someone is your own personal development. When a person is growing, as I already said, you're not growing alone. You have people around. So where I am now, if I think and I look back, I am here because of the contribution of precious people in my life, namely my parents, my teachers, and friends, valuable friends, and then people in my circle who came. Maybe they're not there, but they have contributed in my life and I have grown. So likewise, I have received a contribution and now I have to contribute, and I am contributing in others' growth. Law of contribution यही सिखाता है कि ये greatest gift है जो आपको मिला है किसी के contribution का, और जो आप दूसरों को दे सकते हैं ताकि वो ग्रो करें, और यूं ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो आपके जिंदगी के साथ साथ औरों की जिंदगियों में भी मल्टीप्लाई होता चला जाए. So at the end the statement says, live these laws and reach your potential. इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये प्रूवन बुक है जिसको
almost 40 years पहले टेस्ट किया गया मुख्तलिफ लोगों की लाइव्स पर इम्प्लीमेंट करते हुए and then it was considered publishable. Now there is another question, and again you got your notebook. Would you mind answering this question on your notebook? And the question is, do you have a plan to grow? Do you have a plan to grow? If you have, you can write yes. If you don't have, please do write some. And I believe we have people here who live a life which is an ordered life, or आप यकीनन plan रखते हैं. Even this session is one of your plans. At the very beginning of 2023, आप ग्रो करने के लिए इंटेंशनल हुए हैं और ये आपके प्लान का हिस्सा है, आपके इकोनॉमिकल प्लान का हिस्सा है. But not just this. There are many things that you can do. Maybe in your potential, you are a good writer. So, अब करियर की साइड पे तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो राइटिंग का टैलेंट पाया जाता है एंड यू आर नॉट डूइंग इट, तो बहुत कुछ जो आप इम्पार्ट कर सकते हैं, यू आर स्टॉपिंग इट. मे बी यू आर अ पेंटर और वो आपके अंदर एबिलिटी पाई जाती है, बट when you're not using your time, your hands for this, you could import a lot to the world, but you are not doing it. So start looking into those things as well. बहुत सारी ऐसी चीजें, शायद बहुत कुछ आप रीड कर सकते हैं, लेकिन वो बुक्स ऐसी पड़ी हुई हैं and you're not growing with those books. So such things should be added to your plan for the personal growth. So professional growth पे focus ना करें. Maybe you are not spending enough time with your family. And here you are missing something. आप professionally grow कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, professional growth is not a must that you are growing with the family in your relationship. आपके profession में there is an end. और वो end maybe कुछ साल के बाद आ जाए, maybe कुछ ज़्यादा साल के बाद आ जाए, लेकिन at the end, you have to live with your family, with your relationships. तो मंसूर साहब बहुत अच्छी बात किया करते हैं, your network is your net worth. So अगर आप growth को सिर्फ professional growth समझें, या ये समझें कि जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो शायद मैं कोई personal growth की बात करते हुए सारा focus career पे कर रही हूँ. No, please, just mind my words. मैं personal growth की बात कर रही हूँ. उस personal growth में you are not limited to the professional and career growth. उसमें you have to value your family, your people, after having known yourself, after valuing yourself. और मैंने ये शुरू में बात की थी, if you know how to value yourself, you can value others. If you don't know how to value yourself, you cannot value others. So if you have planned to grow, personal growth के plan में it's a must. आप अपने आप को time देने का plan करें. Because money you can earn, health you cannot. So, house you can earn, family you cannot. उनके साथ आपको time invest करने के लिए, उनके साथ आपको relationship strong करने के लिए, you'll have to invest time with them. Money cannot do that. Your family remains your family when you don't have money. इसलिए अपने प्लान में इन बातों को भी शामिल करें. और जो बात मैं बता रही थी, I really like this quotation from Mansoor Saab, and I'm going to quote it here, which says, your network is your net worth. और हमने देखा है कोरोना के सीजन में, which was quite recent, इतना पुराना नहीं गुजरा, बहुत बहुत बड़ी पोजीशन पर लोग, और बहुत बहुत वो समझते थे यहाँ तक उन्होंने ग्रो कर लिया है, लेकिन हो सकता है उस पोजीशन तक पहुंच के वो इतने एरोगेंट हो चुके थे
कि दे डिड नॉट हैव देयर नेटवर्क, और उस नेटवर्क में ऑथेंटिक लोग उनके साथ नहीं थे। लेकिन जो कोरोना का सीजन आया, उसमें बहुत सारों का पता चल गया, बहुत सारों को पता चल गया कि मैंने इतने सारे अरसे में अगर पैसा कमाया है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन इतना मजीद रहे तो मेरे पास इतने टाइम तक का पैसा है। लेकिन जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बट दे हैव रिलेशनशिप्स विद देम, दे फेल्ट रिच। अगर चैलेंजेस थे सारी दुनिया के लिए, लेकिन वो लोग मुतमईन थे निस्बतन। सो अपनी पर्सनल ग्रोथ में ह्यूमन रिसोर्स का ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, और ये रिसोर्स ऐसा है, अदर रिसोर्सेज कैन वैनिश, दिस डज नॉट। So if you have a plan, please do note it, do write it कि yes I have, उस पर आप गौर करें, उसको देखें, उसको रिव्यू करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसको और कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, what can be added। and I believe इस सेशन के बाद या इस सेशन के दौरान you are getting to have your thinking expanded, और शायद बहुत ज़्यादा ना भी, लेकिन कुछ ज़रूर आपको गेन हो रहा होगा, और उस एस्पेक्ट में आप ग्रो कर सकते हैं। Now if you see, there is another thing written below which says growth is not natural। तो ऐसा ही है, क्या फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे हम बढ़ते चले जाते हैं? नो, इसके लिए हमें खाना पीना पड़ता है, इसके लिए हमें और बहुत कुछ साथ में करना पड़ता है। सो मैं ये फिजिकल ग्रोथ की बात करी, इसी तरह से दूसरे लिहाज से जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है, उसमें भी हम बैठ के नहीं कह सकते कि खुद ब खुद बढ़ोतरी हो जाएगी, खुद ब खुद हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, खुद ब खुद ये सारा कुछ। वी हैव टू पुट एफर्ट्स इन दैट, जिसमें आकर रिलेशनशिप्स खुद ब खुद एस्टैब्लिश नहीं होते और स्ट्रांग नहीं होते, उनको स्ट्रांग करना पड़ता है। आप खुद ब खुद लर्निंग नहीं हो जाते, लर्न करना पड़ता है। So there's a lot more. आइए अब हम कुछ देर देखते हैं, अक्सर हमारी जिंदगियों में जनरली ये कुछ गैप्स हैं जो पाए जाते हैं, ये कॉमन गैप्स हैं जो जनरली पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, उन पे आप गौर कर सकते हैं, आपके माइंड में कोई आए आप अपने पास उसको नोट कर सकते हैं। सो ग्रोथ में कौन से गैप्स हैं जो हो सकते हैं, उसमें हम नंबर 1 पे देखते हैं assumption गैप। इस गैप, इस खला की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। assumption गैप में पहली ही बात वो आ रही है जो अभी हमने की, जहां अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खुद ब खुद ग्रो कर जाएंगे, खुद ब खुद ऐसा होगा, तो वो खुद ब खुद नहीं होता, ऑटोमेटिकली इट डज नॉट हैपन, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। लेकिन अगर खुद ब खुद वाली सोच रखे हैं तो ये एक गैप है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ ये कंटेंट जरूर शेयर किया जाएगा, लेकिन आप इस एस्पेक्ट में नोट कीजिएगा कि कौन से गैप्स आपकी जिंदगी में पाए जाते हैं, आपको लगता है आप इस वजह से ग्रो नहीं कर रहे। तो ये आपका साथ साथ एक सेल्फ एनालिसिस चलेगा, और इस सेल्फ एनालिसिस से आपको ये हेल्प मिलेगी दैट यू कैन वर्क ऑन इट, गेट रिड ऑफ इट एंड ग्रो। द नेक्स्ट इज द नॉलेज गैप। अक्सर हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाते कि ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। सो बहुत सारे आप में से जो आज यहाँ आए, जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया खुद को, तो आपने कहा हम एक्सक्यूज मी, हम और लर्न करना चाहते हैं, हम और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। सो आपने उस गैप को ख़त्म किया और आप अपनी ग्रोथ की तरफ आए हैं। ज़िंदगी में और बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ ये अंदर बात रखते हुए कि नहीं मुझे पता नहीं है,
सो नहीं पता तो बस रहने दें। और हम वहां पर उस नॉलेज को गेन करना नहीं चाहते, हम वहां सीखना नहीं चाहते और उस एरिया में ग्रो नहीं करते, वेयर बाय वी माइट हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इन दैट एरिया अनलाइक अदर्स। फिर इसी तरह से द टाइमिंग गैप, इट्स नॉट द राइट टाइम टू ग्रो। अक्सर हम चीज़ों को आने वाले कल पे डाल देते हैं और अक्सर हम ट्रेड ऑफ नहीं करते कि कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद इतनी ज़रूरी नहीं है जिनको हम पीछे कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको हम आगे ला सकते हैं। हम वो प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पाते जिसमें जाकर हम ये कह देते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी कर नहीं सकते हैं, और इस वजह से हम वो गैप क्रिएट कर देते हैं अपनी ग्रोथ में। फिर इसी तरह अगला एक गैप आता है मिस्टेक गैप। और अब इस मिस्टेक गैप में अमूमन अशखास दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो परफेक्शनिस्ट होकर जिंदगी जीना चाहते हैं और इसलिए ग्रो नहीं करते कि वो ये सोच रहे होते हैं ओ अगर मैंने ये काम किया तो कोई गलती ना हो जाए, कुछ खराबी ना हो जाए मुझसे। और इस चक्कर में कि गलती ना हो जाए, खराबी ना हो जाए, मैं अक्सर यहाँ कोट करती हूँ, एक कमर्शियल आती है सर्फ एक्सल की, आई एम सॉरी इफ आई एम कॉलिंग द नेम, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली उन्हीं की एडवर्टिजमेंट है एंड यू कैन वॉच लेटर अगर आपने नहीं देखे। तो उसमें वो छोटा बच्चा है, वो जाता है और वो सॉरी आई नीड अ ब्रेक। Yeah, so I was talking about the young child, और वो छोटा बच्चा जाता है और वो धूल मिट्टी में और वहाँ पदल में जो मिट्टी है उसके अंदर वो खेलता है, वो गंदा हो गया सारा, और वो वापस आता है। अब थोड़ा सा वो हिचकिचा रहा है कि माँ शायद डांटेंगी, और दूसरी माँ जो पास होती है वो एकदम कहती है ओ कितने गंदे कर दिए कपड़े। तो उसकी अपनी माँ कहती है दाग नहीं तो सीखना नहीं। So if we don't make mistakes, we won't learn. Yes, I have. Thank you, sir. So, आप अपनी जिंदगी में गौर कर सकते हैं कि क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं है दैट अभी बहुत सारी चीज़ों में अवॉइड करते हैं ग्रो करने को। That's a rude attitude towards oneself. That's arrogance. Yeah. Then there is another gap, which is on number 5 here, and it says the perfection gap. उसमें आकर I have to find the best way before I start. ऐसे में अशखास की अक्सर ये सोच होती है वो जो करें वो बस बाकमाल ही हो राइट अवे, और उस बाकमाल आगाज या बाकमाल कुछ कर दिखाने के चक्कर में वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते और वो कितना टाइम ज़ाया कर देते हैं, और कई बार टाइम क्या वो करते ही नहीं है कुछ भी, एंड जस्ट द टाइम गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो ये सोचते रहते हैं जब किया तो ऐसा करना है बस दुनिया देखे, ऐसे चक्कर में दे कैन नॉट ग्रो एंड दैट्स अगेन अ लॉस। द नेक्स्ट इज द इंस्पिरेशन गैप। अब ये भी हमारा अक्सर माशरती तौर पे एक बड़ा मसला है जहाँ आकर हम कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा। सो हमारे पाकिस्तान में ये बहुत मसला है कि हम दिल की बहुत मानते और सुनते हैं, हम दिमाग को अक्सर पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम यही कहते हैं मुझे नहीं लग रहा मैं ये करूं, मैं बस इंस्पायर्ड नहीं हूं, मैं फील नहीं कर रहा, बस
हम अपनी इंस्पिरेशन में ही आके कुछ कर पाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम कुछ कर सकते हैं. So अगर ऐसा कुछ गैप है, you can note it down, you can work on it and get rid of it. The next one is the comparison gap, जिसमें आकर हम अक्सर ये सोचते हैं others are better than me. हम कोई काम शुरू ही नहीं करते, हम ग्रो करना शुरू ही नहीं करते. मे बी कोई बहुत अच्छा लिरिसिस्ट हो, किसकी बहुत अच्छी किसी को पोइट्री आती है, कोई बहुत अच्छे से यू नो लाइक आर्ट वर्क कर सकता है, कोई बहुत अच्छे से यू नो बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है चीज़ों को. सो देयर इज अ लॉट मोर यू नो इन अ पर्सनल पोटेंशियल थिंग. वहां पर आकर हम बगैर कोई स्टेप लिए ही अपने अंदर कंपैरिजन करते हुए कह देते हैं नहीं नहीं दूसरे मुझसे अच्छे कर रहे हैं, पता नहीं किसको पसंद आए या ना आए, मैं वैसा कर पाऊं या ना कर पाऊं. हम शुरू ही नहीं करते और हम वहीं रुक जाते हैं. So don't forget, each one of us is unique. Each one of us has potential. One way or the other, we can excel. हम भर सकते हैं. So please do note for yourself if this is a gap which is hindering your growth. आपकी growth में किसी भी तरह से रुकावट बनता है, तो work on it, get rid of it. And then the next is the expectation gap, जिसमें आकर हम अक्सर इसलिए ग्रो नहीं कर पाते कि हम कुछ शुरू तो करते हैं, लेकिन शुरू करते ही जब चीजें हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती, तो वहां पर हम कह देते हैं कि ओ मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, मैंने तो सोचा था इतनी देर में प्रॉफिट भी मिल जाएगा, मैंने तो सोचा था मैं इस जगह पे आऊंगी और ये इतनी देर में मैंने सीख लेना है, मैंने इतनी देर में ये गेन कर लेना है. नहीं हुआ, बस रहने देते हैं, ये होना ही नहीं है. But you know, your perseverance leads you to success. Time लगता है, results आते हैं. So never give up. Take your time, please. और आप साथ साथ नोट करते जाएं, लिखते जाएं. I'm sorry for my bad throat. Okay, the next slide. It's going slow. Excuse me, ma'am, can we ask questions right now, or maybe can we comment on something, or not yet? You can comment in the chat box. It will be noted. And for the QA, I requested you to please keep your questions to the end of the session, so then we can discuss. So again, these growth gaps are actually traps. And when these are traps, these traps should not trap you. So आपके सामने दोबारा स्लाइड पे ये लिखे हुए हैं as it is, लेकिन क्यों लिखे गए दोबारा, क्यों यहाँ सामने है, so that you can note down and get rid of these. जी फैसल साहब, I can take your question or your comment, please. Yes, I just wanted to ask you a question actually. Don't we grow by experience as well? Does that become a growth gap in your opinion? If we think that experience hoga to hum automatically grow kar jayenge, like most of us do that in Pakistan. So do you think that becomes a growth gap? Somehow I agree with that, and I said that in art पे नहीं रहना, आप बहुत ज़्यादा experienced और talented लोग हैं जो हमारे साथ इस फोरम पे मौजूद हैं, और मैंने कहा था कि ज़रूर अपना इनपुट जो है वो दें, आप अपने पेज पे लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई भी, तो थैंक यू. और मंसूर साहब इसमें ऐड करना चाहते हैं. He is turned on the camera, so let's listen from him.
थैंक यू वेरी मच। आप जरा अपने आप को म्यूट करें। ये जो ग्रोथ गैप है या ग्रोथ के हवाले से ट्रैप्स हैं, उनमें से एक ट्रैप है जो आप बता रहे हैं ना कि एक्सपीरियंस के साथ हम खुद ही ग्रो कर जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने खुद को अपने एट द मर्सी ऑफ टाइम छोड़ दिया ना, कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा आप ग्रो करते जाएंगे। एक्सपीरियंस एक अल्टीमेटली एक पिविटल रोल करता है प्ले आपकी ग्रोथ के अंदर। लेकिन आपकी इंटेंशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका होना बहुत जरूरी है। जाहिर है आपने एक पोजीशन के ऊपर है, 5 ईयर आपने उसके ऊपर लगा दिए, और आप समझ आपने 5 ईयर पहले जब ज्वाइन किया था तब आपने एमबीए किया और उसके बाद कुछ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, और उसके बाद कोई अपने आप को अपडेट भी नहीं किया, और आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस के साथ नई नई चीजें सीखता चला जाऊंगा। आपने कुछ भी खुद को कहीं पे भी इनरोल नहीं किया, नए ट्रेंड्स के बारे में वाकफियत हासिल नहीं की, तो अल्टीमेटली आप ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। और जो एक्सपीरियंस तो आपका हर तरह का होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है ना। एवेल्युएटेड एक्सपीरियंस जो होता है वो बेसिकली आपकी हेल्प करता है ग्रोथ के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आपकी इंटेंशन भी हो, आप अपने आप को रिलेट रखने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करते जा रहे हो, आप कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर बिलीव करते हो, तो तब तो ठीक है कि मैच कर जाएगा आपका एक्सपीरियंस ना। लाइफ गुजारने का भी तो एक एक्सपीरियंस होता है जो हम गुजारते चले जाते हैं। सपोज अगर कोई आदमी, कोई भी पार्टिसिपेंट इस वक्त अगर 20 ईयर का है, तो अल्टीमेटली वो 25 ईयर का हो ही जाएगा। और 25 ईयर, 20 ईयर प्लस 5 ईयर का मतलब 5 ईयर उसके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी जो दूसरी ग्रोथ है, कैरियर में ग्रोथ, प्रोफेशन में ग्रोथ, थिंकिंग में ग्रोथ, उसके लिए जरूरी है कि आप इंटेंशनल हो और उसके बारे में कोई स्टेप लें और उसके लिए एफर्ट करें। तो इन सम हाउ हम कह सकते हैं, जो आपने बात की कि एक्सपीरियंस के साथ इस माइंडसेट के साथ बात करें कि जी एक्सपीरियंस के साथ साथ आप खुद ही ग्रो कर जाएंगे, तो फिर तो वो अल्टीमेटली हो सकता है आप ग्रो करो, हो सकता है आप ग्रो ना करो, हो सकता है ग्रोथ के जो आपकी ग्रोथ की पेस है वो आपके कंट्रोल में ही ना हो, आपकी मर्जी के मुताबिक ही ना हो, आपकी ग्रोथ में आपके कुछ प्लानिंग ही ना हो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जब इंटेंशनल होंगे तो अल्टीमेटली आप ग्रो करेंगे। जी, थैंक Faisal यू सो Saab, मच। I believe it has satisfied your query. यस एग्जैक्टली, ये मेरा भी थोड़ा सा यही पॉइंट था कि हम लोग ना थोड़ा सा यही कहते हैं We पाकिस्तान में। cannot hear you. कैन यू हियर मी नाउ? I'm sorry, I did mute from my side. I'm sorry. Yes, please. Oh, okay. Yeah, so I was just saying in Pakistan we tend to become quite complacent sometimes, कि जो चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं, ठीक है, हम ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे, एंड दैट wastes a lot of time. So इसलिए True. ये मेरे माइंड में ये कमेंट आया था, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वाज बेसिकली फेसिंग द imposter syndrome, when you are given something that you've not studied nor have you worked somewhere, and then you feel that you are inadequate and you start comparing yourself to other people. So maybe Yeah. the course that I'm enrolled to in right now, this was my plan. So this will hopefully benefit me in my professional career, because I will have the fundamentals of HR. I'll learn them in detail. Yeah. So Yeah. that was basically a gap, and hopefully it will not become a gap anymore. We encourage you and highly appreciate you for initiating and taking step to fill in the gap and to get rid of any trap which was holding your success. So thank you that you did not allow any gap to hold you back. We move forward. With this session, we have already removed some of the gaps. Wow, thank you. Thank you. Yeah, I'm encouraged. Thank you. Thank you. Okay, so anyone, could you please read this statement for us all? Anyone? ये एक स्टेटमेंट है लिखी हुई स्क्रीन पे. Anyone? Transition to intentional growth. Right. So previous slide में अभी हमने देखा growth traps. So growth gap traps.
और अब हम उन ट्रैप्स में से कैसे ट्रांजिट कर सकते हैं इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ, उस पे बात करने जा रहे हैं। इस ट्रांजिशन के हवाले से here popped up 4 simple questions. 4 सादे से जो सवालात हैं आपकी स्क्रीन पे आए हैं। ये 4 सवाल आपको एक मौत से दूसरे में ट्रांजिट करने में मदद देते हैं, जिसमें आप ग्रोथ गैप में हैं, ट्रैप्ड हैं, लेकिन फिर कैसे आप इंटेंशनली ग्रो कर सकते हैं। सो उस इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ कैसे मूव करते हैं, ये 4 सवाल अपने आप से पूछते हुए, जिसमें द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर सिंपल क्वेश्चंस, चारों सवालों के जवाब आपके पास हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कहीं से जाके ये जवाब लेके आने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू वांट टू गो इन लाइफ? It talks about destination. Again, here your mind, your hand works. आपका पेन है और आपकी नोटबुक है. Please do ask yourself this question and please write down if you know where do you want to go in life. आपने इस वक्त तक क्या ultimate goal set किया हुआ है? And don't forget that you do have potential to reach that destination, that goal. So this question talks about destination and goal. We move on to the next, which says what direction you want to go. अब आप कहें कि what does this mean? किस डायरेक्शन, किस रुख जाना चाहते हैं? तो हमारे इस्लामाबाद से मरी जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक मरी रोड कहलाता है और दूसरा अब मोटरवे कहलाता है। अब दोनों उधर लेके जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने में बहुत तरह से फर्क है। जो पुराना रोड है, मरी रोड, बहुत सारी जगहों पे नैरो हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे बहुत डेंजरस और बहुत रिस्की है, और बहुत सारी जगहों पे हम उस पे से गुजरते हुए बहुत सारे हसीन मनाजिर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उस तरह से देख नहीं पाते। लेकिन प्रेफरेबली मोटरवे कंपैरिजन में वो जल्दी भी पहुंचाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर वो ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्टेड रोड है, अच्छा कारपेटेड है, गाड़ियां स्मूथ रहती हैं उस पे, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम है, वाइडर रोड्स हैं। सो ये सारी चीजों से इस मिसाल को सामने रखते हुए इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपने डेस्टिनेशन सेट कर ली है तो फिर देखें कितनी डायरेक्शंस जाती हैं एंड व्हाट इज द राइट डायरेक्शन। इट्स नॉट कि आप वहां पर सेफ प्ले करें और बच बचा के रिस्क ना आए कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर देखें कि कौन सा डायरेक्शन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन हो सकता है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन व्हिच सेज, excuse me, what's the farthest you can imagine going? लाइक अगर आप मरी पहुंच गए हैं तो मरी तो यहाँ से पौने घंटे के बाद बोर्ड नजर आ जाता है कि ये मरी है, फिर उससे थोड़ा आगे जाए तो वहां भी यही लिखा है कि मरी है, उससे आगे जाए ये भी लिखा मरी है, लेकिन मॉल रोड तक पहुंचे तो यहाँ से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, फिर उससे ऊपर पत्रियाटा को जाए तो वो भी मरी में शामिल है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कहाँ तक अपनी डेस्टिनेशन में बढ़ने के लिए इमेजिन करते हैं। अगर आपको लगा कि अच्छा मैं इस HR की पोजीशन पे आ सकता हूँ तो कितना हाई जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली आई बिलीव इट वाज लास्ट फ्राइडे और हमारा 3rd बैच भी ग्रेजुएट हुआ और एक
HR मीटअप जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका भी थर्ड टाइम था, इट वाज द थर्ड गैदरिंग, और उसमें सजवानी साहब आए, एंड दिस गाय, he's like level C HR personnel, and his vast experience of years, मैं उनका रेफरेंस इसलिए देना चाह रही हूँ कि उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हुए डिफरेंट पोजीशंस होल्ड किए हैं और उन पे उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, बट was that the end and was that the farthest he could go? No. उसके बाद now he has his own company जो HR के हवाले से काम करती है, और उस एक्सक्यूज मी कंपनी में I think Evolve HR, ये उसका नाम है, but you can find him on LinkedIn, and he's the managing director there. So like this guy has chosen and thought, हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे इसी कोर्स में एग्जिस्टिंग लोगों की जो दुनिया के अंदर हैं, लेकिन आई ट्रूली वांट टू स्टिक टू पाकिस्तान और यहाँ की बात करना चाहती हूँ, और उसमें like he chose not to stick to this. I'm so grateful. आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आज यहाँ पर बताया है कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, और अपने अभी तो बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. आई बिलीव बाय द पैसेज ऑफ टाइम विल गेट टू नो ईच अदर इवन मोर, और हम जान पाएंगे हर एक की जर्नी के हवाले से, और ये भी कि हाउ डू यू ड्रीम एंड व्हाट इज योर ड्रीम, और उसमें आकर आई एम कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन जिससे हम ट्रांजिट करें इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ, ग्रोथ ट्रैप्स से, और अपने आप से ये क्वेश्चन करें व्हाट्स द फारदेस्ट यू कैन इमेजिन गोइंग, कितना दूर जा सकते हैं. सो इस टाइम कुछ नहीं देखें कि ये रिसोर्सेज ये सब कुछ है. आई एम नॉट सेइंग कि आप रियलिस्टिक ना हो, रियलिस्टिक हो, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब हम हीला करते हैं तो खुदा वसीले भी बनाता है, क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है. इसलिए जिनको हम मल्टी मिलियनियर्स देखते हैं, जिनको हम ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड देखते हैं, जिनको हम लैंड ओनर्स के तौर पर देखते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स करते देखते हैं, उनके रिसोर्सेज इस जमीन और दुनिया से बाहर से कहीं से नहीं आते. मार्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्स से यहाँ पर कुछ लाके कुछ नहीं बनाया गया. चांद के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, लेकिन जमीन पर चांद से लाकर कुछ नहीं बनाया गया. जो रॉकेट वहां जाने तक बना, जो स्पेस शटल वहां जाने के लिए बनी, उस सब के रिसोर्सेज इसी जमीन पर से मिले. उन सब के लिए जो लिखित पढ़त हुई फॉर्मूलाज इवॉल्व किए हैं, जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए हैं, सब इस जमीन पे मौजूद है. इफ फॉर देम, व्हाई नॉट फॉर यू, व्हाई नॉट फॉर अस? Now, another next question, and it's the last big question, yet very simple. How long will it take? एक टाइम फ्रेम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नहीं है कि आपने प्लान बना लिया और आप प्लान बना के बस हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और आपके ठीक है जब हो जाएगा. नो. मैं गुज़श्ता दिनों में, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू दिस, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं इसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ. किसी की मुलाकात इलॉन मस्क के फादर से हुई, एक जर्नलिस्ट की, और उसने बड़ी तारीफ की कि आप भी बड़े कामयाब शख्स हैं, आपका दूसरा बेटा भी बड़ा कामयाब शख्स है, लेकिन इलॉन मस्क की तो बात ही कुछ और है, और देखे ना वो कहाँ है और क्या. वाह. उसके बाप ने कहा नहीं, जिस तरह से और सवाल करने वाले ने, लेट मी फिनिश विद द क्वेश्चन फर्स्ट, उसने कहा कि वाओ, आपने कितनी लाइफ को प्लान किया कि आप भी कामयाब दौलतमंद, आपका बेटा दूसरा वो भी कामयाब दौलतमंद, और इलॉन मस्क जो है वो तो सबसे आगे निकल गया. उसके बाप ने कहा नो, स्टिल ही इज 5 years behind the target that he set for himself. और आप ये देखें कि पूरी दुनिया क्या कहती है और हमें कहाँ नजर आता है वो.
So if he could do it and he belongs to the same world, we can do it too. इसलिए it's really important to set time कि कितने time में मुझे अपने इस goal को achieve करना है. Let's say अगर कहीं कोई कमी, कोई घाटा, कोई कमजोरी आएगी, तो at least आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने कभी कोशिश नहीं की थी. इसलिए अब इन सारे सवालों पे गौर करते हुए, अपने प्लान को सामने रखते हुए, जो आपने देखा, जो आपने लिखा, मेरी ये डेस्टिनेशन है, यहाँ तक जाना चाहती हूँ, डायरेक्शन क्या हो सकती है, कितना दूर जा सकती हूँ, और फिर कितना टाइम फ्रेम, कितने टाइम के अंदर मैं उसको कवर कर सकती हूँ, चेस कर सकती हूँ. इस सब के लिए, इन सारे सवालों के लिए आप काम कब करना शुरू करेंगे? आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका, डू इट नाउ. सो अपनी अपनी जगह पे, if you sorry, don't mind, could you just say out loud, do it now? इसके लिए अब किसी आने वाले कल का इंतजार ना करें. 2022 पीछे रह गया, अब ये 23 है. आप रुकेंगे, 23 नहीं रुकेगा. 23 24 बन जाएगा, 24 25 बन जाएगा, और शायद जिंदगी रुक जाए. लेकिन जो आपके पास है, अपने उस पोटेंशियल को फ्लरिश होने दें, ग्रो करने दें, एंड टॉक टू योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ, और अपने उसी पेज पर जिस पे आप लिख रहे हैं, नीचे ये भी लिख लीजिए, डू इट नाउ. सो इसको करने का वक्त कोई जब आएगा तब नहीं, किसी राइट टाइम का इंतजार नहीं करें. मेक द टाइम राइट. सो सीरियसली do what you've been looking forward to do. A cough break. Would anyone mind reading this quotation by John C. Maxwell? और फिर आप इसके हवाले से कोई बात भी करें. बाकी लोग भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, प्लीज. What is your take on this statement by John C. Maxwell? जी फैसल, Can I read it? please. The only guarantee that tomorrow will be better is if you're growing today. Yeah. This is so true. This actually takes us to the idea that we have to live in the moment. Yeah. See, for example, if you do the simple math equation, 5 plus 2 is equal to 7, right? Yeah. The 2 is variable, right? Yeah. If you increase the variable, if you do 5 plus 3, the answer will be 8. So the variable is actually the present that you are experiencing right now. So if you live in the moment, ये आपके इख्तियार में होता है to make it better in the future. So that is, which brings me back to the statement के जो guarantee है ना, जो कि कल बेहतर होगा, वो ये है कि अगर आप आज grow कर रहे हैं. So Yeah. this is so true. A great example of the variables. Thank you so much. Anyone else? In my Okay. opinion, Yeah. if we think about it, that like the guarantee for tomorrow's growth is that if we use or now the do it now time perfectly from today, if we start for our growth from today, then tomorrow is definitely a guarantee that yes, we will grow. Great. Thank you for your input, ma'am. Thank you so much. Anyone else? Okay. Right.
अब हम बात करते हैं why don't we do it now? उसमें आकर जो बात हमारी जिंदगी में रुकावट बनती है वो फियर फैक्टर्स हैं। इनमें से हो सकता है कोई एक फियर फैक्टर आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है एक से ज्यादा फेस कर रहे हैं। अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू हियर, और इससे ज्यादा हो सकते हैं। अगर कोई और फियर फैक्टर है अदर देन दिस, यू कैन नोट इट डाउन विद यू प्लीज। और अगर इनमें से कोई है उसको भी नोट डाउन करें, इसलिए कि रिटन फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, और स्पेसिफिकली यू कैन वर्क ऑन इट एंड गेट रिड ऑफ इट। देन let's see what could be these fear factors. The first one is fear of failure. हम काम को ये देखते हुए भी कि मेरे पास प्लान है, लेकिन एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? फेलियर के डर से। प्लान हो सकता है गुज़श्ता कई सालों से हो, लेकिन फिर भी वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुई उसकी, और उसका एक ही रीजन अगर फियर ऑफ फेलियर है तो इस पे काम करने की जरूरत है। और जॉन मैक्सवेल अपनी एक कोटेशन में, उनकी एक स्टेटमेंट में ये बात कहते हैं कि फेलियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर फ्रेंड। व्हाई? ओनली इफ यू मेक इट योर फ्रेंड, लाइक लर्निंग फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस and turning them into the good experience. So then there is another fear, which is the fear of trading security for the unknown. दूसरे लफ्जों में इसको हम ये कहेंगे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हम हो जाते हैं कि पता नहीं ये शुरू कर दिया, ये मेरा प्लान तो बन गया, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। सो रिस्क अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो भी बड़ा किसी ने, आप जिनको सक्सेसफुल लोग हम कहें या गिरदानते हैं, आप उनमें से कोई एक शख्स ऐसा बता दें जिसकी सक्सेस स्टोरी में उसने सिक्योरिटी को ट्रेड ऑफ ना किया हो, उसने रिस्क ना लिया हो, उसने पेन एक्सपीरियंस ना किया हो, उसने प्राइस ना पे की हो। सो यू नो, ग्रोथ इज कॉस्टली। If you have not paid the price, you cannot grow. तो आपको ये देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। So अगर ये फियर आपके अंदर है, और जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा हो भी ना और कोई रिस्क आए भी ना, लेकिन अगर जो आया है वो उस इंटेंसिटी का नहीं है जिसका आप सोच रहे थे, और आप क्वाइट एम्पावर्ड थे, एलिजिबल थे, या रिसोर्स थे कि आप उस पर ओवरकम कर सके। सो बजाय इसके कि हम एक्सपीरियंस किए बगैर और उन शूज में हुए बगैर ये पहले कंसीडर कर लें कि ये नहीं होना चाहिए, हम रिस्क लेना सीखें। द नेक्स्ट थिंग इज फियर ऑफ बीइंग ओवर एक्सटेंडेड ऑन रिसोर्सेज। इसमें भी ये है कि हमें लगता है कि अगर मेरे वसाइल काफ़ी ना हुए तो मैं क्या करूँगा। सो मेरा ये प्लान तो मैंने बना लिया, लेकिन ना काफ़ी वसाइल की वजह से मैं कर नहीं पाऊँगा। वसाइल ज़रूरी हैं, अहम है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर रिसोर्सेज। आप देखें कि वन वे और द अदर, बट इफ़ यू हैव दैट ड्रीम यू हैव टू परस्यू इट। आपको एक साइड से नहीं अगर रिसोर्सेज मिल रहे, think of the other sides, think of the many other doors which can be opened for you and you can pursue your dream. The next is the fear of what others think. पाकिस्तान का, हमारी कौम का, हमारा एक बड़ा मसला, लोग क्या कहेंगे। So ऐसा बहुत मसला है कि all the time हमें ये लगता है पता नहीं लोग की कहेंगे, और हम लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं, और वो जो हमने सोचा होता है हम उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं और परसू नहीं करते। इसलिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू थिंक दैट व्हाट यू हैव, हाउ कैन इट एड वैल्यू टू यू एंड हाउ कैन इट एड वैल्यू टू अदर पीपल। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। सो नेक्स्ट इज फियर ऑफ पुशिंग अदर्स अवे।
अक्सर हम इसलिए नहीं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते, ओ मैंने ये काम शुरू कर दिया तो दूसरे ये ना समझे मैं उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं उन्हें नीचा कर रहा हूँ, मैं उन्हें पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं उनसे आगे कुछ कर रहा हूँ. Again, we started from the word unique, we started from the word potential. जो यूनिकनेस आपकी है, जो पोटेंशियल आपका है, वो किसी और का नहीं है. और इसका विटनेस जो है वो ये है कि you are uniquely formed and none of the world has the same fingerprints like yourself, and that is what makes you unique. इस वजह से जो आपका आइडिया है वो किसी से थोड़ा मिलता जुलता जरूर हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, रिजेंबल कर सकती हैं चीजें, बट दैट डज नॉट मीन एग्जैक्टली एज इट इज आप वही कर रहे हैं जो कोई दूसरा कर रहा है. मोबाइल फोन कंपनीज पूरी दुनिया में क्या सिर्फ एक ही है? ड्रेस डिजाइनर्स पूरी दुनिया में डिजाइन करते हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, वह हर ब्रांड का एक अपना नाम है और उन्होंने बनाए हैं अपने नाम, कमाए हैं अपने नाम. एयरप्लेन्स हैं पूरी दुनिया में, कितने कितने ज्यादा लोगों के पास हैं, लाइक गवर्नमेंट्स ऑन करती हैं, कंट्रीज ऑन करते हैं. अब वो क्या कहें कि उसने बना लिया उस जैसा, तो अब हम वहां पर चीजों को देखना शुरू करें कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं, और फिर वो मेरी और हमारी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड करेंगी. और लाइक कई मर्तबा लोगों ने सिर्फ अपने लिए ही थोड़े से चीज बनाने शुरू कर दिया. लेट्स से थॉमस एडिसन ने यकीनन दुनिया के लिए ही लाइट बनाने का, लेकिन ही मस्ट नॉट हैव द आइडिया कि किस तरह से दुनिया रोशन रोशन हो जाएगी बल्ब से जब वो बना रहे थे. तो just see the bigger view of the things, the other side of the picture. So is fear could be, if it is found in you, smash it down, please. So just few fears that we have talked about. उसके हवाले से अब एक मजेदार सी बात सामने है. अब अपने आप से सवाल कीजिएगा, which emotion is stronger, the desire to change and grow or one of these fears? इसलिए कि fear भी एक emotion है और faith भी एक feeling, एक emotion है. So अगर आप अपने fear को feed करते हैं तो faith will be dead. लेकिन अगर आप faith को feed करते हैं, आप यकीन रखते हैं खुद पर, आप यकीन रखते हैं उस सलाहियत पर जो खुदादाद है और आपके अंदर रखी गई है, तो आप फियर को मात दे देंगे, आप उसको मार देंगे. और अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो ये बात बजा तौर पर दुरुस्त है, जो डर गया वो मर गया. सो इसलिए start believing in the potential that you have, in your uniqueness, and start growing. Overcome this challenge of fear, इनमें से कोई भी, fear of failure, fear of trade insecurity for the unknown, fear of being overextended on resources, or fear of what others think, fear of pushing others away. इसमें से कुछ भी या इसके अलावा आपको लगता है कि I have another type of fear, you can just mention it on your notebook. That is going to help you in its own way. So that is a self-help that you are giving yourself today. और अपना analysis करते हुए आप उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं, क्लियर हो रही हैं. So please do help yourself to come out of it. और फिर उसके बाद ओवरकम कीजिए और अपने इस इमोशन, इस डिजायर को स्ट्रॉन्ग कीजिए जिसमें यू वांट टू चेंज एंड वांट टू ग्रो. Now, at the very last, we have this assessment sheet on campus. हम लोग इसके प्रिंट आउट हैंड ओवर करते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज अपने लिए इसका जरूर प्रिंट आउट लीजिएगा. और
अभी आप सुन लें, समझ लें कि ये असेसमेंट कैसे किए जाती है, और उसके बाद आप जब इसका प्रिंट आउट लें तो प्लीज डू फिल इट, इसको जरूर आप कीजिएगा। आप इसको आज कीजिएगा एंड देन कीप दिस सेम पेज विद यू। आई मीन आज अगर आप प्रिंट कर सकते हैं ठीक, अगर नहीं आप अपने लिए कल कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर वर्क प्लेस। और आफ्टर 10 weeks, once you are done with this CHRP, मैं अभी से रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि आप इसको रिपीट कीजिएगा। क्यों रिपीट करना है? प्लीज नो द रीजन आफ्टर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। आपके सामने जो स्क्रीन पे ये असेसमेंट शीट डिस्प्लेड है, इसमें 2 कॉलम्स हैं जो टाइटल्ड हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे एक्सीडेंटल ग्रोथ, मेरे राइट हैंड पे इंटेंशनल ग्रोथ। राइट बिलो द टाइटल्स एक स्केल है जो 0 से लेकर 10 तक है। ये स्केल, इसके मिडल में जो 5 लिखा है, ये एवरेज है और इसी से आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं। अब अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल ग्रोथ में आप फॉल कर रहे हैं, जब इस लिस्ट की चीजें पढ़ी जाएं, तो आपने अपने आप को 5 से कम मार्क्स देने हैं, 5 या 5 से कम, कि ये बात मुझ में पाई जाती है। और अगर आपको लगता है कि इस हवाले से आप ज्यादा डिक्लाइन करते हैं इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ, तो फिर आपने अपने आप को 5 से ऊपर मार्क्स देने हैं और ऑनेस्टली देने हैं। हो सकता है किसी बात में आपको लगे कि ओ आई एम परफेक्ट, सो अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने आप को 10 मार्क्स दे सकते हैं, कोई मजाका नहीं है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट शीट है, आपके साथ रहेगी, हमने इसको आपसे नहीं मंगवाना, कोई इस पर रेड मार्क नहीं करनी, इसकी वजह से कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं रुक रहा। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द होल कोर्स, जिसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं एंड असिस्टिंग यू to start off with your personal growth. And if you are a person who is already intentional for her growth, which we believe you are, as it already shows when you are here to attend this first session, but still how much more you can grow, this session will surely help you, particularly this assessment sheet, which is going to give you the marks, जहां से आप evaluate कर सके और आपके लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं और आप स्ट्रेटजाइज करते हुए अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स ला सकें। सो आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, और आपने अभी सिर्फ सुन लिया, समझ भी लीजिए और कल प्रिंट आउट लेकर प्लीज आप इसको, इस पे मार्क्स भी दीजिएगा खुद को। सो अभी एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले, ये कंपैरिजन है, आप दोनों चीजें नहीं हो सकते। या तो आप एक्सीडेंटल ग्रोथ के कॉलम में फॉल करेंगे या आप इंटेंशनल ग्रोथ में। एक्सीडेंटल में आप पीक पे होंगे, कम होंगे, जब आप ग्रेजुअली थोड़ा ऐसा है तो आप 5 पे हैं, 4 पे हैं, ज्यादा ऐसे हैं तो आप 1 पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल ही आप ऐसे हैं तो आप 0 कह दें खुद को, ताकि आप कुछ और नंबर साथ ऐड कर सकें, मेहनत कर सकें और 0 से हीरो हो सकें। I know you guys are hero. I'm sorry just for the, just joking. तो माजरत अगर किसी को गुस्ताखी लगे। On the other side, intentional growth में sometimes हम चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन शायद जैसे हम कर सकते हैं हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते, वहाँ इनपुट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। So this is a great help. This worksheet really helps many. हमारा ये कोर्स जो हमने करवाया, उसके टेस्टिमोनियल्स में फर्स्ट बैच के ग्रेजुएट्स ने ये बात, ग्रेजुएट्स में से एक ने ये बात कही, आई रियली विश इफ आई हैड डन दिस कोर्स 20 years back. Had I done this course 20 years back, life would be totally different in every aspect. So कोई बात नहीं, मंसूर साहब अक्सर ये बात कहते हैं, आई गेस किसी और की कोट करते हैं कि दरख्त लगाने का
अच्छा वक्त या तो 20 साल पहले था या फिर अभी है. So it's okay what you could not do in the past, but we are grateful to have this new year, and we are just in the resolutory time so we can improve. Now I'm reading it for you. Accidental growth में fall करने वाले अशखास वो सोचते हैं कि प्लान तो कर लिया है, अच्छा कल शुरू कर लेंगे. सो ये वो लोग हैं जो आने वाले कल पे बात डाल देते हैं और उन्हें लगता है कि हादसाती तौर पे कहीं ग्रोथ हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी. सो अगर आप ऐसे हैं तो अपने साथ सच बोलें, आपका पेज कोई नहीं देखने जा रहा, तो आप थोड़ा सा सच्चाई से मार्क्स दे के इम्प्रूव कर सकते हैं. बट आई बिलीव all of you are intentional people where you insist on starting now. Since we are not perfect, maybe in any life area, हम कुछ चीजों को आने वाले वक्त पे छोड़ रहे हैं, कल पे छोड़ रहे हैं, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं. यू आर नॉट ओवरऑल अ पर्सन जो एक्सीडेंटल ग्रोथ का शिकार है, बट पर्सनल ग्रोथ के हवाले से अगर आपने चीजें रोकी हुई हैं, छोड़ी हुई हैं, तो आपको फिर गौर करने की जरूरत है. सो एक्सीडेंटल ग्रोथ के फर्स्ट स्टेटमेंट के ऑपोजिट इंटेंशनल ग्रोथ में इंसिस्ट ऑन स्टार्टिंग नाउ. इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग ये अभी शुरू करने पे यकीन रखते हैं. डू इट नाउ. देन एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल वेट फॉर ग्रोथ टू कम. बैठे बिठाए कहीं से चीजें हो जाएंगी, आ जाएगा, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, या बस मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे लिंक्स हैं, हो ही जाएगा. लेकिन उनके लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है. सो इंटेंशनल ग्रोथ के लोग जो हैं, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो. उभरने के लिए, ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस, जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक मैं इसके लिए कोई हिलो हुज्जत ना करूं, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी. इसी तरह एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग, दे लर्न ओनली फ्रॉम मिस्टेक्स. जब तक गलती नहीं करे सीखते नहीं है. इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग, दे लर्न फ्रॉम बिफोर मिस्टेक्स. अब ये कैसे स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है कि गलती से पहले सीख जाना? सो सच पीपल आर द पीपल जो कंसल्टेशंस लेते हैं, जो काउंसल लेते हैं, जो एडवाइस पे यकीन रखते हैं, सजेशंस पे यकीन रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर करके, मेंटोर्स के साथ सॉरी और तजर्बेकार लोगों के साथ बातचीत करते हैं. मे बी दे गेन इनफ नॉलेज इंटरनेट से और जगहों से, लाइक वो अच्छी सर्च करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, जिस वजह से वो बिफोर मिस्टेक्स सीख जाते हैं. एक्सक्यूज मी प्लीज. The next one is accidental growth people, they depend on good luck, whereby intentional growth people, they rely on hard work. So accidental growth वालों का बड़ा मसला है. वो कहते हैं आज सुबह उठे, उसका मुंह देख लिया, इसलिए दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, फलां ऑफिस में आए तो मेरे से अच्छा काम नहीं होता, फलां है. They are all about the luck. They are all about ये दिन और वो दिन, जबकि कहा जाता है कि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. So it's really important to start working for the things, and we should rely on hard work. In our faith, our belief, surely divinity matters, but divinely भी hard work के बगैर चीजें नहीं होते. Then accidental growth में such people quit early and often. कोई भी काम शुरू करते हैं, जितने जज्बाती होकर शुरू करते हैं उतने जज्बाती होकर छोड़ भी देते हैं. जबकि इसके ऑपोजिट इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग, दे परसिवियर लॉन्ग एंड हार्ड. आप इस हवाले से देख लीजिएगा आप कैसे हैं और कहाँ पे आपको वर्कआउट करना है. एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे फॉल इनटू बैड हैबिट्स, whereby intentional growth people fight for good habit. इसको मैं जब देखती हूँ तो हमारी जुबान में आसान हो जाता है कि यहाँ पर बुरी आदतें पड़ जाती हैं. सो एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले जो लोग होते हैं उनकी आदतें बुरी होती हैं, उन्हें बुरी आदतें पड़ी होती हैं. लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग अच्छी आदतों के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. सो
ये सोचने की बात है कि बुरी आदतें पड़ जाती हैं, अच्छी किसी को नहीं पड़ती, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये ऐसा क्या है? कोई भी चीज जो पड़ जाती है वो आसान होती है, और कोई भी चीज जिसको पढ़ना और पकड़ना पड़ता है वहाँ एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, फाइट एंड स्ट्रगल। इसलिए इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग हार्ड वर्क होते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं गुड हैबिट्स के लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें। एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग दे फॉलो थ्रू, जुबान के पक्के, जो कहा है वो करके दिखाते हैं। सो दे नो, दे माइंड देयर वर्ड्स एंड दे इम्प्लीमेंट, दे आर प्रैक्टिकल पीपल। जबकि एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग वो बस बातों के मीनार खड़े करते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल दे प्ले इट सेफ, इस वाले से पहले भी बात हुई, बच बचा के खेलते हैं। जहां उनको लग रहा है ये सही है वो उसी तरफ को हो जाएंगे। जैसे आज कल जो सस्ती शोहरत है वो हासिल करने के लिए लोग जिस रुख लगाओ लग जाते हैं, जब नहीं होता बाद में रोने धोने भी बैठ जाते हैं। लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग वो रिस्क लेते हैं और ठोस जिंदगी की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं। एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल दे थिंक लाइक अ विक्टिम। ये भी बड़ा मसला है कि वो अपने कमजोर रहने का, अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते रहते हैं। मेरे पास पैसे होते तो ये कर लेता, पैसे पे इल्जाम, उसने मुझे ये दे दिया होता तो ये कर लेता, फलां वक्त में ये हुआ होता तो ये कर लेते, गवर्नमेंट ऐसा करती तो हम ऐसा कर लेते। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और ऐसे लोगों के लिए इल्जाम तराशी becomes such easy, all the times they are just criticizing, all the times they are complacent, सिर्फ शिकायत शिकायत शिकायत, और उनकी जिंदगी में फिर यही रह जाता है। But intentional growth people, they think like a learner, और वो बैड एक्सपीरियंसेस में से भी अपनी लर्निंग गेन करते हैं, उसको पॉजिटिवली देखते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए गलतियां उनको सिखा भी देती हैं। इसी तरह एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल दे रिलाई ऑन टैलेंट, whereby intentional growth people they rely on character। इसकी एग्जांपल मैं यूं देना चाहूंगी, बहुत से लोग टिकटॉक को, सोशल मीडिया को पॉजिटिव भी यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी बस अपने टैलेंट की बुनियाद पर सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं। वो उस टैलेंट को ठोस बनाने के लिए किसी तरह की कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए वो डेडिकेटेड नहीं है। बस उन्हें लगता है सामने आए, अच्छी आवाज है, गा दिया, दूसरों ने वाह वाह कर दी, ये काफी है। लेकिन एक टाइम आता है कि ये वाह वाह हर बार नहीं होती है। सो एवरी डे इज नॉट संडे। टैलेंट हर वक्त काम नहीं आता। इट रियली मैटर्स कि किसी शख्स ने अपना किरदार कैसा बनाया है, और उस किरदार से उसकी क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी की वजह से उसकी लेगेसी है, तब वो याद रखा जाता है। इसलिए इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग वो काम करते हैं जिससे वो लीडरशिप के उस लेवल पे पहुंचते हैं जिसमें उनका पिविटल रोल है, जिसमें वो आकर पिनिकल लेवल पे हैं, एक ऐसी नुमाया हैसियत पे लोग उन्हें याद रखें। सो यू नो योरसेल्फ बेटर, और आप इस हवाले से देख सकते हैं कि आप खुद पे कितना काम कर रहे हैं कि आपकी लेगेसी कायम रहे। एंड द लास्ट वन, स्टॉप लर्निंग आफ्टर ग्रेजुएशन। एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग ये करते हैं, जो ही ग्रेजुएशन हुई बैग वो, किताबें वो, मुड़ उनको देखना नहीं, या ओल्ड बुक शॉप पे जाके बेच दिए, किसी और के काम आ जाए। लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग दे नेवर स्टॉप लर्निंग, दे नो लहद से महद तक वो इस बात को जानते हैं। सो दे लर्न फ्रॉम द स्मॉल वंस, द यंग वंस, दे लर्न फ्रॉम द बिग वंस, द ओल्ड वंस, द एक्सपीरियंस वंस, they learn from everywhere, but they don't forget to learn. So this is all for today. I would like to have your feedback on the WhatsApp group. Wahan par. Thank you for listening attentively. Thank you if you have participated anyways by, unmuting yourself, raising up your hands, and noting down on your notebook. So in चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए, your listening means a lot to me. I really appreciate everything. Thank you. This is over from my side. Mansoor Saab, please.
If there is QA something, so we can do it for some time quickly. It's already 30:30. Oh, 8:30. Thank you very much for such a wonderful session. This session is very much important कि हम being an HR professional हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, जो कि लेके चलती है हमें प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ, और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ ही फिर लेके चलती है हमारे डिपार्टमेंटल ग्रोथ की तरफ, टीम की ग्रोथ की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ। तो ये एक टॉपिक हमने इसमें आज स्टार्ट किया, जो फर्स्ट डे था। हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देंगे आज के सेशन की, साथ में हमारा जो मटेरियल था, लर्निंग मटेरियल, वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त में, आप ग्रुप में कर सकते हैं। और फिर दोबारा आपसे कल हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। सेम टाइम 6:30 PM पे हम स्टार्ट करेंगे टुमारो। ओके, हैव अ नाइस डे।